भारतीय रिजर्व बैंक ने इस बार रेपो रेट में बदलाव नहीं किया है। इसे 5.5% पर जस रखा है, यानी लोन महंगे नहीं होंगे और आपकी ईएमआई भी नहीं बढ़ेगी। इससे पहले अगस्त में हुई मीटिंग में भी इसमें बदलाव नहीं हुआ था। देश की जीडीपी ग्रोथ का अनुमान है 6.5% से बढ़कर 6.80% किया गया है। यह फैसला मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की 29 सितंबर से 1 अक्टूबर तक चली मीटिंग में किया गया है। आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा ने आज यानी 1 अक्टूबर को इसकी जानकारी दी। आरबीआई गवर्नर ने कहा कि कमेटी के सभी मेंबर्स ब्याज दरों में स्थिर रखने के पक्ष में थे। जीएसटी की कटौती के बाद महंगाई में कमी के चलते ये फैसला लिया गया है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई जिस रेट पर बैंकों को लोन देता है उस रेपो रेट कहते हैं। इसमें बदलाव नहीं होने का मतलब है कि बजाय दरें ना तो बढ़ेगी और ना ही घटेगी। आरबीआई ने फरवरी में हुई मीटिंग में ब्याज दरों को 6.5% से घटाकर 6.25% कर दिया गया है। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की ओर से ये कटौती करीब 5 साल बाद की गई थी। दूसरी बार अप्रैल में हुई मीटिंग में भी ब्याज दर 0.25% घटाई गई। जून में तीसरी बार दरों में 0.50% कटौती हुई, यानी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में 3 बार से ब्याज दरें 1% घटाई गई, जिससे किसी भी सेंट्रल बैंक के पास पॉलिसी रेट के रूप में महंगाई से लड़ने का एक शक्तिशाली टूल है। जब महंगाई बहुत ज्यादा होती है तो सेंट्रल बैंक पॉलिसी रेट बढ़ाकर इकोनॉमी में मनी फ्लो को कम करने की कोशिश करता है। पॉलिसी रेट ज्यादा होगी तो बैंक को सेंट्रल बैंक से मिलने वाला कर्ज महंगा होगा। बदले में बैंक अपने ग्राहकों के लिए लोन महंगा कर देता है। इससे इकोनॉमी में मनी फ्लो कम होता है। मनी फ्लो कम होता है तो डिमांड में कमी आती है और महंगाई घट जाती है। इस तरह जब इकोनॉमी बुरे दौर से गुजरती है तो रिकवरी के लिए मनी फ्लो बढ़ाने की जरूरत पड़ती है। ऐसे में सेंट्रल बैंक पॉलिसी रेट कम कर देता है। इससे बैंकों को सेंट्रल बैंक से मिलने वाला कर्ज सस्ता हो जाता है और ग्राहकों को भी सस्ती दर पर लोन मिलता है। After a detailed assessment of the evolving macroeconomic conditions and the outlook, the MPC voted unanimously to keep the policy repo rate unchanged at 5.5%. Consequently, the STF rate remains at 5.25%, while the MSF rate and the bank rate remain at 5.75%. The MPC also decided to continue with the neutral stance. I shall now briefly set out the rationale for these decisions. The MPC observed that the overall inflation outlook has turned even more benign in the last few months due to a sharp decline in food prices and the rationalization of GST rates. The average headline inflation for this year has been consequently revised lower from 3.7%, which was projected in June, 3.1% in August, to now 2.6%. Headline inflation for Q4 this year and Q1 next year too have been revised downwards and are broadly aligned with the target despite unfavorable base effects. Core inflation for the year and Q1 next year is also expected to remain contained. The MPC also noted that growth outlook remains resilient, supported by domestic drivers, despite weak demand. It is likely to get further support from a favorable monsoon, lower inflation, monetary easing, and the salubrious impact of the recent GST reforms. However, growth continues to be below our aspirations. Even though the growth projection for the current financial year is now being revised upwards, the forward-looking projections for Q3 and beyond are expected to be slightly lower than projected earlier. This is primarily due to trade-related headwinds, despite being partially offset by the impetus provided by the recent GST reforms. Summarizing, the MPC concluded that there has been a significant moderation in inflation
Moreover, the prevailing global uncertainties and tariff-related developments are likely to decelerate growth in H2 this year and beyond. The current macroeconomic conditions and the outlook has opened up policy space for further supporting growth. However, the MPC noted that the impact of the front-loaded monetary policy actions and the recent fiscal measures is still playing out. The trade-related uncertainties are also unfolding.